Okay, students, let's get started with O-level physics, May June 2022, paper 1, variant 1, 1 hour का paper है. Let's start with this. A length of copper wire is labeled length 0.5 meters and diameter 0.5 millimeter. Okay. सो लेंथ आपकी 0.5 मीटर है, डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है. विच इंस्ट्रूमेंट्स आर मोस्ट सूटेबल, कौन से इंस्ट्रूमेंट मोस्ट सूटेबल हैं टू मेजर एक्यूरेटली द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ द वायर. देखो, लेंथ is 0.5 meters. It cannot be measured using calipers because calipers are used for a small lengths. तो मीटर रूल से आपने लेंथ मेजर करनी है. And diameter is very small. You cannot measure it using a meter rule. You will measure it using a micrometer. B is your answer. A driver drives a car at uniform velocity along the road. Perfect. The driver sees a hazard and applies the brake. What is the car's motion as it moves through the thinking distance and as it moves through the braking distance? देखो, thinking distance में आप क्या कर रहे होगे? You will be thinking about applying the brake. So you will keep on moving at uniform velocity. बेटा, thinking distance क्या होता है? The distance covered during reaction time. Reaction time में तो आप constant velocity, ये uniform velocity पे चल रहे होगे. Distance covered during reaction time. So during reaction time, you will be moving at the uniform velocity. A and B gets cancelled out. ड्यूरिंग ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो रहा होगा? आप ब्रेक अप्लाई कर रहे होगे, आपकी वेलोसिटी कम हो रही होगी. डिसैलरेशन विल बी हैपनिंग. C is your answer. Easy. Let's move further ahead. Question 3 पे आ जाओ. The diagram represents the moon that is in its orbit around the earth. ठीक है भाई, मून मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ. कैन यू रियलाइज मून इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ? Whenever an object is moving in a circle, the resultant force acts towards the center. यहाँ पे आपकी resultant force center की तरफ act कर रही है. A is your answer. Simple. The mass of an object m is related to the weight and gravitational field strength. Which equation is correct? अच्छा जी, कौन सी इक्वेशन करेक्ट है? हमने क्या पढ़ा था? वेट इज इक्वल टू एम जी. अगर वेट को हम डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कर दें, दैट इज इक्वल टू एम. एनी ऑप्शंस लाइक दैट? प्लीज योर आंसर. A plastic cube of density rho is compressed so that each of its sides become one half of its original length. What is the new density of the cube? चलो, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है. Now, if you realize, इसको हम एक तरीके से कर सकते हैं. हम इसको कह देते हैं, दो क्यूब्स बना लेते हैं. ठीक है, दो क्यूब्स बना लेते हैं. वन इज द ओल्ड क्यूब. ओल्ड क्यूब में हमारे पास लेंथ हम ले लेते हैं. Let's say the length here is L. You know density is equals to mass over volume. Mass is constant. Density becomes inversely proportional to volume. So for the old cube, the volume is L into L into L, that is equals to L cube. The density is rho. Now let's look at the new wala cube. For the new wala cube, the lengths have become one half. The length is equals to one half. But when your volume come out to be one half L, one half, 1 over 2L into 1 over 2L. This comes out to be what? 1 over 8L cube is equal to your new volume. बेटा, आपका न्यू वॉल्यूम क्या आ गया? 1/8 L क्यूब. ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था? L क्यूब. व्हाट हैज हैपेंड? वॉल्यूम को क्या हुआ है? इट हैज गॉटन डिवाइडेड बाय 8. वॉल्यूम 8 के फैक्टर से कम हो गया है. वॉल्यूम एंड डेंसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इफ द वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 8 और डिवाइडेड बाय 8, density will increase by a factor of 8. If your initial density was rho, now your density will become 8 rho. Your answer is D. 5 का आंसर क्या आ गया भाई? डी आ गया. लेट्स फर्दर मूव अहेड. क्वेश्चन 6 पे आते हैं. Four objects have a square basis of equal area. ठीक है.
विच ऑब्जेक्ट इज लीस्ट स्टेबल? अच्छा जी, कौन सा ऑब्जेक्ट लीस्ट स्टेबल? बेटा कौन सा ऑब्जेक्ट लीस्ट स्टेबल होगा इफ योर बेस एरियाज आर द सेम? द ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, बेस एरिया एंड द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपने सबका बेस एरिया इक्वल कर दिया, तो अब आपकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है? योर एंटायर स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी मार्क किस तरह करते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज lies in the heavier region। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा कहाँ लाई करती है? इन द हेवियर रीजन। अब ऑप्शन ए में यू हैव अ रेगुलर ट्रायंगल, रेगुलर रेक्टेंगल, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे मिडिल में लाई करेगी। ऑप्शन बी में द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज टुवर्ड्स द हेवियर साइड, इट विल कम टू द डाउन साइड। ऑप्शन सी में द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज टुवर्ड्स द हेवियर साइड, द हेवियर साइड इज द टॉप साइड, ऊपर की तरफ आ जाती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑप्शन डी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं मिडिल में होगी। सो विच ऑब्जेक्ट हैज द हाईएस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी? या किस ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है? सी, सी इज योर आंसर ऑफ बीइंग द लीस्ट स्टेबल ऑब्जेक्ट। आ जाओ क्वेश्चन 7 पे। The initial pressure of a volume V1 of a fixed mass of gas is V1. The gas expands at constant temperature until it has a volume of V2 at a pressure of V2. Which statement about the pressure and the volume of the gas is not correct? बेटा ये कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? बॉयल्स लॉ। P1 V1 is equals to P2 V2। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। The pressure is measured in Newton per meter cube. This is incorrect। प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन पर meter square। The first statement is incorrect. We don't need to read the further ones. Okay. A stone falls at terminal velocity in air। Terminal velocity का मतलब क्या होता है भाई? Constant velocity. Okay. What is equals to the change in gravitational potential energy of the stone? Okay. So if you are falling at a constant velocity, a terminal velocity, your kinetic energy doesn't change. There is no change in kinetic energy। बेटा अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी पे फॉल कर रहे हो तो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। योर एंटायर चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? Gets converted into thermal energy। D is your answer for question number 8। आगे बढ़ते बेटा, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 9। Water in a river is used to turn a turbine as the water flows downstream। How is this type of power described? अच्छा जी, वाटर जो है टरबाइन को रन करने के लिए यूज हो रहा है। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ पावर? दिस टाइप ऑफ पावर इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। सिंपल। A load is pulled by a rope attached to a motor। The resultant force exerted by the rope on the load is shown in the diagram। In each diagram, the load moves in the direction of the force shown and takes 10 seconds to travel 1 meter। In which diagram does the motor has the greatest power? बेटा पावर का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन ओवर टाइम। ओके, लेट्स एनालाइज ऑप्शन ए। यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी? व्हाट विल बी योर वर्क डन? फोर्स दैट इज 12 इनटू द डिस्टेंस दैट इज 1 टाइम दैट इज 10। पावर कम्स आउट टू बी 1.2 वोल्ट्स। बी पे आ जाओ, पावर क्या आ जाएगी? फोर्स दैट इज 8 multiplied by the distance that is 1 time that is 10। 0.8 volts comes out to be a power। पावर ऑफ सी निकाल लो। 10 न्यूटन की फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस दैट इज 1 डिवाइडेड बाय द टाइम दैट इज 10। 1 वोल्ट्स कम्स आउट टू बी a power। पावर ऑफ डी भी निकाल लो। फोर्स दैट इज 4 into the distance that is 1 divided by the time that is 10। 0.4 volts comes out to be a power here। ग्रेटेस्ट पावर कहाँ है? इन ऑप्शन ए। 10 का आंसर बिकम्स ए। लेट्स फर्दर मूव अहेड। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन 11 पे आ जाओ। द टोटल एनर्जी इंसिडेंट इन 1 second ऑन अ ग्रुप ऑफ सोलर पैनल्स is 120 joules per meter cube। The group of solar panel converts 720 joules of electrical energy to 120 joules of useful
अच्छा देखो वापस पढ़ लेते हैं इसको. आई थिंक आई हैव रेड समथिंग रॉन्ग हियर. लेट्स रीड इट अगेन. The total energy incident in 1 second on a group of solar panel is this. ठीक है. मतलब इतनी 120 joules of energy is getting incident on 1 meter square of solar panels. The group of solar panels converts 720 joules of light energy into 120 joules of useful electrical energy. भाई आपकी 720 joules of light energy gets converted into 120 joules of useful electrical energy in 1 second. What is the total surface area of the panels and what is the efficiency of the system? अच्छा जी. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पैनल किस तरह निकालेंगे बेटा? वो 1 मीटर स्क्वायर में कितनी एनर्जी फॉल कर रही है? 120 जूल्स. इफ यू हैव अ टोटल एनर्जी ऑफ 720 जूल्स, हाउ मच एरिया of solar panel does it cover? X किसके इक्वल आ जाएगा? 720 divided by 120. X comes out to be 6 meter square. बेटा अगर 1 मीटर स्क्वायर ऑफ सोलर पैनल इज गेटिंग 120 जूल ऑफ एनर्जी, 720 जूल ऑफ एनर्जी कितने एरिया में आएंगे? 6 मीटर स्क्वायर में. बी भी कैंसिल आउट, डी भी कैंसिल आउट. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी. एफिशिएंसी किस तरह निकालोगे? एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय द एनर्जी इनपुट. आउटपुट एनर्जी क्या है बेटा? 120. इनपुट एनर्जी क्या है? 720. डिवाइड कर दो, एफिशिएंसी क्या आ जाती है? व्हाट डज योर एफिशिएंसी कम्स आउट टू बी? हाँ जी, efficiency comes out to be roughly 0.167%. या फिर इसको आप 0.17 कर सकते हो. दैट इज रफली इक्वल टू 17%. ए इज योर आंसर. 11 का आंसर क्या हो गया भाई? ए हो गया. लेट्स फर्दर मूव अहेड. A 1000 volt 240 volts electrical device is switched on. How much energy is consumed in 5 minutes? एनर्जी निकालनी है भाई. एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? पावर इनटू टाइम. व्हाट इज योर पावर? 1000. टाइम क्या है? 5 minutes. 5 into 60 seconds in each minute. 1000 into 5 into 60. This comes out to be 300,000 joules is your energy. 12 का आंसर क्या आ गया? डी आ गया. अब 13 पे आ जाओ. A building has walls made from wood and steel. What describes the way in which thermal energy is transferred through the walls? अच्छा जी. वुड क्या है? इंसुलेटर. स्टील क्या है? कंडक्टर. ओके. ऑल्सो स्टील इज अ मेटल, वुड इज अ नॉन मेटल. बेटा व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू? स्टील के पास क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. वुड के पास क्या होंगे? नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. Conduction through the metal by both vibration of particles and movement of electrons through the steel B is your answer. हमेशा याद रखो मेटल्स में क्या होता है? आपकी कंडक्शन होती है of electricity, of energy through vibration of particles and vibration of electrons as well. अच्छा जी. This has been excluded from your syllabus, so I am skipping this. Let's further move ahead. In many applications, a thermocouple is used to measure the temperature instead of a liquid in glass thermometer. Which property of a thermocouple is a major advantage? थर्मोकपल का एडवांटेज क्या होता है? ऑल्दो दिस हैज बीन आल्सो एक्सक्लूडेड. थर्मोकपल का एडवांटेज क्या होता है? इट हैज अ वेरी क्विक रिस्पांस टाइम. सी इज योर आंसर. This has also been excluded from your syllabus. Let's move ahead. What is a usual symbol and what is heat capacity is also excluded from your syllabus. चलो आगे बढ़ते हैं. Which row describes the arrangement of particles and the forces between a particle in a solid? Arrangement of particles क्या होता है solid में? Regular. C or D option cancel out. What is the forces between the particles in a solid? Strong. A is your answer. अब आ जाओ 19 पे. A wave in a sea collides with a cliff. A crest of the wave hits the cliff once every 6 seconds. Okay. The horizontal distance between a crest and an adjacent trough is this. You have to calculate the speed of the wave. अच्छा बेटा देखो, a crest of the wave hits the cliff once every 6 सेकेंड. मतलब आप एक crest प्रोड्यूस कर रहे हो once every 6 सेकेंड. इसका मतलब क्या है? आपका टाइम पीरियड क्या हो गया? 6 सेकेंड. अगर आप एक crest प्रोड्यूस कर रहे हो in 6 seconds, your time period is 6 seconds.
एंड यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड टर्फ इज 4.5 मीटर। इसका मतलब क्या है, अगर ये आपका क्रेस्ट है, दिस इज योर टर्फ, द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड द टर्फ इज 4.5 meters। अब आपने ये बात याद रखनी है, क्रेस्ट से लेकर टर्फ तक योर वेवलेंथ इज व्हाट, हाफ लैम्डा। 4.5 इज इक्वल टू हाफ लैम्डा। लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, 9 meters के इक्वल। वेवलेंथ इज इक्वल टू 9 meters। टाइम पीरियड इज 6 seconds। कैन यू कैलकुलेट द स्पीड, यस, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी की जगह क्या रख दोगे, 1/टाइम पीरियड इंटू वेवलेंथ। 1/6 into the wavelength, that is 9. 3/2 is your speed. 1.2 centimeters per second is your answer. Why centimeters per second? क्योंकि अगर आप देखो तो आपकी, ओ सॉरी, meters per second, my bad। 1.5 meters per second will be your answer. Why? Because your wavelength is in meters. That's why meters per second due to the time. D is your answer. 19 का answer is D, simple, nothing complicated। A sound wave refracts as it moves from air to water. Which quantities change? बेटा, रिफ्रैक्शन में कौन कौन सी क्वांटिटीज चेंज होती थी, स्पीड एंड वेवलेंथ ओनली। बी इज योर आंसर। 20 का आंसर बी हो गया। लेट्स फिर देर आगे बढ़ते हैं। An object is viewed from a thin converging lens. The diagram shows the path of two rays from the top of an object to an eye. Okay, thin converging lens है, और आपकी इमेज जो है वो यहाँ पे बन रही है। परफेक्ट, दिस इज योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट और द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। इफ यू रियलाइज द इमेज इज अपराइट, है ना, इमेज का एरो भी ऊपर की तरफ है, इट इज अपराइट, तो ये इन्वर्टेड वाले ऑप्शन हम काट देते हैं। दूसरी बात ये देखो कि दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट क्या है ये, द इमेज इज इनलार्ज्ड और लार्जर। बी इज योर आंसर। 221, योर इमेज इज लार्जर एंड इट इज अपराइट। 22 पे आ जाओ बेटा। A ray of white light enters the prism as shown, perfect, which row is correct? वेव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड। अच्छा जी, देखो यहाँ पे जब आपकी डिस्पर्जन हो रही होती है लाइट की, ऑलवेज रिमेंबर एट दिस पॉइंट टू प्रोसेसेस आर हैपनिंग। रिफ्रैक्शन, एज यू आर मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, जैसे ही आप मीडियम चेंज करते हो रिफ्रैक्शन होती है। सेकंड प्रोसेस कौन सा हो रहा होता है बेटा, डिस्पर्जन। ओके, तो ये बहुत चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट कंपेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू लाइट, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्मॉलर होती है कंपेयर टू ब्लू लाइट। सी इज योर आंसर। 22 का। आगे बढ़ते हैं। विच वेव्स आर नॉट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स है भाई, रेडियो वेव्स पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। टेलीविजन सिग्नल्स आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, या यू कैन से दैट टेलीविजन सिग्नल्स में जो वेव्स यूज होती हैं दैट आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। Ultrasound is not part of electromagnetic spectrum. Ultrasound is a sound wave that is not part of electromagnetic spectrum. अच्छा, ये सवाल बड़ा अच्छा है। This is one of the most beautiful questions in O-level physics. Okay, let's see this question. A man stands between two buildings P and Q. Okay, he is 50 meters from P and 200 meters from Q. ठीक है, ये जो है 50 meters from building P है and 200 meters from building Q है। He sounds the horn. He hears the first echo from building P। अच्छा जी, देखो जब आपका ये क्या कह सकते हो, योर मैन sounds a horn, the sound will travel in both direction, left and right। How will you hear the echo from building P? The sound will go, hit the building P and get reflected back towards the man। बेटा क्या होगा, साउंड जाएगा बिल्डिंग पी को हिट करेगा, विल गेट रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द मैन। जाने का डिस्टेंस इज 50 मीटर, आने का डिस्टेंस इज 50 मीटर। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड फॉर echo 1 is 100 meters। ये जो बिल्डिंग पी से echo आ रहा है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 100 मीटर। एंड 1 second लेटर ही हियर्स द फर्स्ट echo फ्रॉम बिल्डिंग क्यू। अच्छा, बिल्डिंग क्यू से कैसे echo आ रहा होगा बेटा, your sound will travel towards the right as well, goes like this, hits the building, then come backwards।
तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 200 मीटर जाने का, 200 मीटर आने का. व्हाट विल बी D2? What will be the distance for the second echo, or you can say the first echo from building Q? 400 meters. You have to calculate the speed of sound. स्पीड ऑफ साउंड कैसे निकालोगे? चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. बेटा एको 1 फ्रॉम बिल्डिंग पी कितने डिस्टेंस में आ रहा था? 100 मीटर्स. एको 1 फ्रॉम बिल्डिंग क्यू कितने डिस्टेंस में आ रहा था? 400 मीटर्स में. 400 माइनस 100 इज योर चेंज इन डिस्टेंस. व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू एकोज? बेटा दोनों एकोज के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? 1 सेकंड का. डिवाइड कर दो. What does your velocity comes out to be? 300 meters per second. आपका आंसर क्या आ गया? B is simple. Let's further move ahead. Sound travels at different speeds in each of the three states of matter, solid, liquid, and gas. Which row shows where sound travels the fastest and where sound travels the slowest? बेटा साउंड जो है फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करेगा? सॉलिड में. स्लोएस्ट किस में ट्रैवल करेगा? गैसेस में. डी इज योर आंसर. व्हाट इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड का एक यूज क्या है? Ultrasound is used in what? Ultrasound is used in cleaning jewelries. A is your answer to 26. आगे बढ़ते हैं. Which material is used for the core of an electromagnet? Iron. C is your answer. अच्छा जी. Two metal spheres are mounted on insulating stand. Sphere X is initially uncharged, ठीक है ये uncharged है, and sphere Y is initially positively charged. Okay, positively charged है, ये uncharged है. Perfect. A metal rod held by an insulating stand is placed in contact with X and Y. अशोक ठीक है, ये एक metal rod है जो हमने यहाँ पे place कर दी in contact with X and Y. Okay. What are the charges on X and Y after the rod is placed in contact with them? अच्छा जी, charges on X and Y क्या होंगे once the metal rod is placed in contact with them? Any ideas? देखो अगर metal rod आपने यहाँ पे place कर दी, what will happen? This this sphere Y is positively charged. This will cause all this region to become negatively charged. सारे नेगेटिव चार्जेस करीब आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस दूर चले जाएंगे. Seeing this, sphere X will also become positively charged. A will be your answer. Sphere X and Y both will become positively charged. आगे आ जाओ. Which device involves the use of statical electrical charges? अभी आपको पता होना जरूरी नहीं है because this has been excluded from the syllabus. Just for your journal knowledge, I am telling you. A photocopier uses electrical charges. Okay. An initially uncharged copper rod is placed in a uniform electric field. The rod is parallel to the field, which diagram shows the charges induced on the rod. Okay. तो बेटा हमेशा याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल या हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल या फ्रॉम द पॉजिटिव साइड टू द नेगेटिव साइड. यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा. यू कैन नॉट इंड्यूस अ नेगेटिव चार्ज विद द नेगेटिव फील्ड ऑफ द प्लेट. यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करती है. राइट साइड पे आपका क्या चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव. बट लेफ्ट पे नेगेटिव नहीं है. व्हाई? दिस कैंसिल आउट, दिस कैंसिल आउट. लेट्स एनालाइज ऑप्शन डी. पॉजिटिव से नेगेटिव आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है. What is the charge on the right hand side of the rod? Positive. What is the charge on the left hand side of the rod? Negative. D is your answer. The diagram shows a simple electrical circuit. What is the charge on electron? Negative. और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागता है. तो इट विल गो फ्रॉम y टू x. B इज योर आंसर. 31 का आंसर क्या है बेटा? B. हमेशा यहाँ पे लिख लो कन्वेंशनल करंट. कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है, या फिर अगर एग्जामिनर सिर्फ आपसे करंट की डायरेक्शन पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ करंट की, फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. हावेवर अगर आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन किस तरह ट्रैवल करेगा, इट विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ऑलवेज रिमेंबर दैट. अब आगे आ जाओ.
When the flash on a camera is used, a charge of 1.5 coulomb flows for a second of this. The average voltage across the lamp is this. What is the electrical energy supplied to the lamp and what is the average power supplied? अच्छा जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले निकाल लें या चलो पहले पावर निकाल लेते हैं. पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम. बेटा एनर्जी कैसे निकालोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट एनर्जी? इसलिए मैं कह रहा था पहले एनर्जी निकाल लेते. हाउ विल यू कैलकुलेट एनर्जी? एनर्जी निकालने का बहुत इजी सा तरीका है. वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज. वोल्टेज इनटू चार्ज इज इक्वल टू योर वर्क डन और एनर्जी. वोल्टेज क्या है बेटा? 3600. चार्ज क्या है? 1.5. व्हाट डज योर वर्क डन कम्स आउट टू बी? वर्क डन क्या आ जाएगा? 3600 इंटू 1.5. योर work done comes out to be 5400 joules is equals to your work done. A and B cancel out. 5400 टाइम क्या है भाई? 0.003. डिवाइड कर दो 003. This comes out to be 1.8 into 10 raised to the power of 6 volts as your power. Energy आपकी 5400 आ गई. D is your answer. What is your unit of potential difference and which measuring instrument is used to measure potential difference? Potential difference का unit क्या है? वोल्ट. और किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से. 34 पे आ जाओ बेटा. Which circuit has the smallest total resistance? Smallest total resistance कब होती है? When resistors are connected in parallel. जब भी resistors parallel में connected होते हैं, your total resistance is the smallest. कहाँ पे रेजिस्टर सारे के सारे पैरेलल में? इन ऑप्शन सी 10 ohm 10 ohm 10 ohm all are connected in parallel. Let's see this question. A metal kettle is plugged into a main socket. The plug contains a suitable fuse. ठीक है, प्लग के अंदर एक फ्यूज लगा हुआ है. The kettle's cable is damaged and the fuse blows. Why does the fuse blow off? हमने बताना है कि फ्यूज ब्लो क्यों होता है. The bare earth wire in the cable touches the bare live wire. हो सकता है. If the live wire comes in contact with the earth wire, the current in the circuit will increase drastically. Your fuse blows off. हो सकता है ऐसा. A is your answer. 36 पे आ जाओ. As a magnet is moved into the coil of wire as shown, there is a small positive reading on the sensitive ammeter. Which change must increase the size of the reading? भाई size of the reading किस तरह increase हो सकती है? Pulling, no, pulling the magnet out, pushing the magnet in faster. अगर आप मैग्नेट को फास्टर मूव करना शुरू करोगे, आपकी एमीटर की रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 37. अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इंडीड. जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड. The diagram shows the circuit for a model power line with two transformers and a lamp with the output. ठीक है, आउटपुट पे आपका अभी क्या वोल्टेज आ रहा है? 24 volts. Okay. What is the input voltage? You have to calculate the input voltage. First of all, if your voltage at the 40 turns is 24 volts, बेटा यहाँ पे भी आपका voltage क्या रहेगा? 24 volts. Now this thing is a transformer. ये क्या चीज है? ये एक ट्रांसफार्मर है. यहाँ पे your voltage will change for sure. Let's say this is your voltage primary. Let's say this is your voltage secondary. Let's say this is your primary number of turns. Let's say this is your secondary number of turns. Can you calculate the voltage primary? Yes. Voltage primary divided by voltage secondary is equals to the number of turns on the primary divided by the number of turns on the secondary. Voltage primary divided by the voltage secondary, that is 24. Primary number of turns क्या है? 100. Secondary number of turns क्या है? 200. This becomes 1. This becomes 2. प्राइमरी वोल्टेज क्या हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 12 वोल्ट्स. अब ये वाला वोल्टेज क्या आ गया? 12 वोल्ट्स. इफ दिस इज 12, दिस विल आल्सो बी 12, है ना? इफ दिस इज 12 वोल्ट्स, दिस विल आल्सो बी 12 वोल्ट्स. सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर ये 12 वोल्ट्स है तो ये भी 12 वोल्ट्स होगा? क्योंकि बेटा देखो, बीच में जो है वो ट्रांसफार्मर नहीं है. ट्रांसफार्मर नहीं है बीच में, कोई एक इलेक्ट्रिकल प्लेट पड़ी हुई है. सी इज योर आंसर. लेट्स फर्दर मूव अहेड. Electrical power is transmitted by cables over long distances at very high voltage. अगर आप हाई वोल्टेजेस यूज कर रहे हो, आपका करंट क्या हो जाएगा? लो.
If your current is low, power losses in the cable will be low. The current is also low. D is your answer. क्यों power losses low हो जाते हैं बेटा? Because I square R is your power loss. अगर आप बहुत हाई वोल्टेजेस रखते हो, करंट कम हो जाता है, पावर लॉस भी आपका कम हो जाएगा. सिंपल. अच्छा जी, लेट्स सी दिस. द डायग्राम शोज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. ऑलवेज रिमेंबर दैट. Entering a magnetic field. The magnetic field is directed into the page. What is the direction of deflection या फिर direction of force आपने निकालनी है as they enter the magnetic field. Whenever you have to calculate direction of force, you apply what? Fleming's left hand rule. आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज. इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड पे जा रहे हैं बेटा, तो करंट कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट साइड पे. योर फोर्स विल बी वेयर? डाउन द पेज. डी इज योर आंसर टू 39 फोर्स डाउनवर्ड आपके. अच्छा, अब आप कहोगे कि सर आपने करंट की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे क्यों ली है? सर, व्हाई हैव यू टेकन द करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट? सो ऑलवेज रिमेंबर द डायरेक्शन ऑफ current is opposite to the direction of what? Is opposite to direction of negative charges. नेगेटिव चार्जेस कहाँ फ्लो कर रहे हैं? राइट साइड पे. करंट की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी? लेफ्ट साइड पे. नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो कर रहे हैं? राइट साइड पे. करंट की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी? लेफ्ट साइड पे. In Geiger-Marsden experiment, alpha particles are fired at a thin gold sheet. Okay, alpha particles fire हो रहे हैं at a thin gold sheet. Most alpha particles pass right through the thin gold sheet. Okay, a few are deflected. What can be reduced from this experiment? इस experiment से आप क्या reduce कर सकते हो? The nucleus is very small. The nucleus has no charge. नहीं. The electrons surround the nucleus. No, no. A is your answer. The nucleus is very small and the entire atom is empty space. The nucleus is very small. 40 ka answer is A. I think that is it for this paper. If you have any questions, you can ask in the comments.